Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. In previous lecture, we solved various practical problems and we have discussed liquidity of short-term analysis that are related to debt paying ability of the business. Today, we will solve more practical problems, then we will start another chapter. Keep in touch with me, please. Today, we will discuss long-term debt paying ability, income statement consideration when determining long-term debt paying ability, times interest earned, fixed charge coverage that are related to the interest coverage ratios. We will discuss in detail later on. First of all, I will solve the exercise. Please read करें question को, slide आपके सामने है. What is the question? J Appliance Company has supplied you with the following data regarding working capital and sales for the year 2004, 2003 and 2002. You can see working capital is given, sales are given for the 3 years, industry average for the ratio, sales to the working capital is given. What is the requirement? First requirement is compute the sales to working capital ratio for each year. What we need to calculate? Sales to working capital ratio. Then comments on the sales to working capital ratio for J Appliance Company in relation to the industry average and what this may indicate. कि जो आपकी रेशियो है वो क्या इंडिकेट कर रही है. मेरे साथ रही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेट सेल्स वर्किंग कैपिटल रेशियो is equal to net sales divided by working capital for the year 2004, 2003 and 2002. First of all, we will calculate sales to working ratio for the year 2004. Net sales is given 650,000 divided by 270,000 that will be the 4.1 times. $2.4 for the year 2004. Next, we will calculate the sales to working capital ratio for the year 2003. $2,003 is equal to sales is 600,000 divided by 260,000. That is 2.3. Now we will calculate the ratio for 2002. Is we can take amount from the question 240,000 and 500,000.
that is 2.8. Now we will discuss the comment. What are the comments for these ratios? The sales to working capital ratio for J Appliance Company was substantially below the industry average for all 3 years. This tentative indicates that working capital is not efficient in relation to the sales. There was some improvement in the ratio each year. क्या मतलब कि हर साल रेशियो में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इंडस्ट्री जो हमारा बेंचमार्क सेट है उससे कम है. तो इम्प्रूवमेंट इज गुड, बट रेशियो एट दिस मोमेंट इज नॉट गुड if you are comparing with the industry average ratio. Very easy question. Next question is, we need to find out the various ratios in this question. AIM Plumbing Company sells plumbing fixtures on terms 210 net 30. I have already told you about this term. 210 means if you will pay the money within 10 days, you can get 2% discount facility. Otherwise, you must pay within 30 days. 30 is a length of credit. Its financial statements over the last years are as follows. 2001 की financial statement दी हुई, 2002 and for year 2003. What are the requirements? First requirement is we need to calculate the current ratio, then we will calculate the acid test ratio, then we will have to calculate the average collection period, inventory turnover, then we will calculate the total debt equity ratio, then dear students we will calculate the gross profit margin, then we will calculate the net profit margin, total asset turnover and return on assets. Keep in touch and we will calculate all ratios one by one. First of all, we are going to calculate the current ratio. What is the formula? Can you tell me? Very easy. Current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. We can take current assets and current liabilities from data. Data is given. You can see. First of all, we will calculate for year 2001. Current assets are given. Cash is 30,000 and account receivables are 200,000 and inventory is given 400,000. These are 3 current assets and we need to accumulate the current assets. Total will be the 630,000. 630,000 divided by current liabilities. We can accumulate current liabilities from the data. Data is in front of you, just like accounts payable 230,000 and accruals 200,000. Total will be 430,000 and bank loan short term, that is 100,000. Total will be the 530,000. 530,000. Ratio will be 1.19 ratio 1. What does mean? If company will pay the liability for $1, company must have 1.19 current assets against the current liabilities. Already we have discussed benchmark minimum is equal to 2 ratio, but here 1.19, it means current ratio is very lower compared than to industry average ratio. Now we will calculate the acid test ratio. Basically at this moment we are calculating for the year 2001. Okay. Second is acid test ratio.
is equal to current assets minus inventories divided by current liabilities. Dear students, already I have told you what are the things will be included in the current assets. 3 items will be included. Number 1, cash and equivalents, marketable securities, and net receivables. Here we need to subtract the inventories from current assets. Total current assets are 630,000 minus, we can see the inventory 400,000 minus 400,000 divided by 530,000. Ratio will be the 0.43 ratio 1. What does mean? If company will pay the liability for $1, company have only 0.43 cent. This is not good for the company, because already we have discussed minimum industry average ratio will be the 1. That's why here in this situation asset test ratio is very lower. We need to improve the basically current and quick assets. Now we will calculate another ratio. Another ratio is average collection period. Average collection period. Formula will be the account receivables multiplied by 365 divided by credit sales. What will be the formula for the average collection period? That will be included receivables multiplied by days in a year divided by credit sales. We can get amount from the question. In this situation, we have receivables 200,000 multiplied by 365 divided by credit sales. Credit sale, we will consider here sales. All sales are considered basically related to the credit sales, because there is no mention about the sales. That is 40 lakh. Okay. Accounts receivable will be 200,000 for the year 2001 multiplied by 365 divided by 40 lakh. That will be the 18 days. Average collection period will be the 18 days. कि आपके जो receivable है will be converted into cash within 18 days. It shows that your credit policy, basically you allow to the customers only credit for the 18 days. Now we will calculate another ratio. What will be the another ratio? Inventory turnover. Inventory turnover is equal to cost of goods sold divided by average inventory. Definitely cost of goods sold is given in the question. We can take amount from this 32 lakh. $32 lakh divided by average inventory is given how much? 400,000. That will be the 18. Inventory turnover means result will be the in times. Your inventory will be converted into the sales 8 times a year. What does it mean?
your inventory will be converted into sales 8 times per year. Now we will calculate the another ratio, that is total debt equity ratio. Total debt equity ratio is equal to total gross total debt divided by shareholders equity. Now we will need to calculate the total debt first from the question. Total debts are basically included short term and long term. Now we have accounts payable, accruals, short term bank loan and long term debts. We need to accumulate these four amounts. 430,000 plus 100,000, 530,000 plus 300,000, 830,000. Total debt will be $830,000 divided by shareholders equity. Shareholders equity is given, that is 100,000, and 500,000 will be the retained earnings. Total will be the 600,000. Ratio will be 1.38. What does mean? Shareholder equity में दो items include होंगे. Number one is common stock. Number two is retained earnings. Because retained earnings is a part of the profit, it will be distributed among the shareholders as a dividend. That's why we need to add up the shareholder equity into the retained earnings. Next is gross profit margin. Now we will calculate the gross profit margin. Gross profit margin is equal to gross profit divided by net sales. Gross profit means sales minus cost of goods sold divided by नेट सेल्स. डेटा से हम ले सकते हैं sales minus cost of goods sold divided by net sales. Sales are given 40 lakh minus cost of goods sold is given 32 lakh divided by 40 lakh. That will be the .20 ratio 1. What does mean? 20% of the sales. यानी कि अगर आपकी सेल 40 लाख होगी तो उसके ऊपर 2% जो होगा 20% विल बी दी ग्रास प्रॉफिट. 0.20 मीन्स कि अगर आपकी सेल 1 है तो आपका उसमें से जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 0.20 सेंट होगा. नाउ वी विल कैलकुलेट दी नेट प्रॉफिट मार्जिन. Net profit margin is equal to net profit or net income divided by net sales. Dear students, net profit is given. We can see net profit is 300,000. Divided by 40 lakh or 4 million is equal to 0.075 ratio 1. If company sale is $1, net profit will be the 0.075 cent. It means 7.5% of the
sale will be the net profit margin. Now we will calculate another ratio, that will be total assets turnover. Total assets turnover. Formula will be net sales divided by average total assets. Total assets. Net sales is given 4 million divided by total assets. We can take this amount from data. Total assets are given 14,30,000. 14,30,000 is equal to, ratio will be 2.80. What does mean? इसका मतलब ये है कि आपकी टोटल एसेट टर्नओवर क्या है, कि आप एसेट जो है वो आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं. तो 2.8 टाइम्स बेसिकली आपके एसेट्स कन्वर्ट हो रहे हैं सेल के लिए, सेल उससे फ़ायदा उठा रही है. नेक्स्ट विल बी दी रिटर्न ऑन एसेट्स, दैट विल बी दी लास्ट. यहाँ जगह नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ रिटर्न ऑन एसेट्स. फार्मूला विल बी नेट इनकम divided by average total assets. Net income is given 300,000 divided by total assets are given 14,30,000 is equal to 0.31 ratio 1. यानी कि आपको एसेट्स के ऊपर क्या रिटर्न मिल रहा है. अगर आपके एसेट्स एम्प्लॉयड हैं $1 के, तो उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वो 0.31 है. तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल कैलकुलेट ऑल रेशियोज ऑन द ईयर 2003 and 2004. First of all, we will calculate the current ratio. Current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. Current assets for the year 2003 is given, that is 20,000, 260,000 and 480,000. 20,000 plus 260,000 plus 480,000 divided by current liabilities. Current liabilities are 300,000 plus 210,000 plus 100,000. $300,000 plus 210,000 plus 100,000. Ratio will be 1.25, ratio 1. If you can compare with the previous year for 2002, now ratio is good and improving. Okay. Now we will calculate the asset test ratio. Formula will be the asset test ratio is equal to current assets minus current inventories divided by current liabilities. 20,000 plus 260,000 minus inventory 400,000.
minus 480,000 divided by all current liabilities ratio will be 0.46. Now we will calculate another ratio, that will be the average collection period. Average collection period formula is given: receivables multiplied by days in a year divided by credit sales. Dear students, receivables multiplied by days in a year divided by credit. अगर आपकी सेल्स टू टाइप्स की गिवन हो, कैश और क्रेडिट, तो ओनली वी विल पिक अप दी क्रेडिट सेल्स, नॉट कैश सेल्स. दैट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज collection period. Receivables are given. Receivables are 260,000 and credit sale is given 43 lakh. 260,000 multiplied by 365 divided by 43 lakh. Ratio will be the 22 days. Dear students, यहाँ हमने देखा कि प्रीवियस जो रेशियो थी वो 18 थी, नाउ 22. इट शोज दैट कि आपने क्रेडिट टर्म्स बढ़ा दी, यानी कि आपने उधार पहले 18 डेज के लिए दे रहे थे, अब जो उधार है वो आप अलाउ कर रहे हैं फॉर 22 डेज. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर रेशियो, दैट विल बी द इन्वेंट्री टर्नओवर. इन्वेंट्री टर्नओवर फार्मूला इज गिवन. व्हाट इज द फार्मूला, कैन यू टेल मी? वेरी सिंपल, cost of goods sold divided by average inventory. Cost of goods sold divided by average inventory. Cost of goods sold is given. इन्वेंट्री टर्नओवर का ये फार्मूला है. Cost of goods sold is given 36 lakh, okay, and average inventory is given 480,000. $36 lakh divided by 480,000, that will be 7.5 times. It means our inventory will be converted into sales 7.5 times per year. Last time 8 था, इसका मतलब है हमारी इन्वेंट्री कन्वर्जन भी जो है वो भी कम हो गई है. नेक्स्ट विल बी दी टोटल डेट इक्विटी रेशियो. टोटल डेट इक्विटी रेशियो फार्मूला क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया. बहुत सिंपल है, फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे और याद करने का तरीकेकार प्रैक्टिस है. टोटल डेट इक्विटी फार्मूला इज टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स that is the formula is related to total debt इक्विटी रेशियो इसको कहते हैं हम. टोटल डेट डेटा से आप ले सकते हैं. हाउ मेनी? 300,000 प्लस 210,000 510,000 प्लस 100,000 इज इक्वल टू 610,000 प्लस 300,000 900,000 10,000, यानी कि 9,10,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है? शेयर होल्डर्स इक्विटी इंक्लूडेड
two things, retained earnings and common stock holders equity. That is 650,000. Ratio will be 1.40. पहले रेशियो आपकी 1.38 थी, अब रेशियो इंक्रीज होके आपकी 1.40 हो गई. इसका मतलब है आपके डेट का पोर्शन इंक्रीज हो गया. तो डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट दी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. बड़ा सिंपल फार्मूला है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू gross profit divided by net sales. Both are given. और ग्रास प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बताया था, सेल माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रास प्रॉफिट. सेल हम ले लेते हैं क्वेश्चन से. सेल्स आर गिवन 43 लाख माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 36 लाख. $43 lakh minus 36 lakh divided by net sales. Net sales are given 43 lakh. That will be 0.163 ratio 1. What shows that? If company ratio is $1, gross profit will be the 0.16 out of 1. यानी ₹1 अगर आपकी सेल है तो 16 पैसे उसमें से आपका ग्रॉस प्रॉफिट है. यू कैन से 16.3% ऑफ द सेल्स. नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर रेशियो, दैट विल बी नेट प्रॉफिट मार्जिन. नेट प्रॉफिट मार्जिन is equal to net profit divided by net sales. Net profit is given in question. You can see net profit is 200,000. 200,000 divided by 43 lakh, 4.3 million. Ratio will be the 0.047 रेशो 1. तो डी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर आपकी सेल $1 है तो 0.047 जो है सेंट वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, यानी कि ओनली 4.7% ऑफ द सेल्स. इफ यू कैन कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर, reduction shows that in the current year in case of net profit margin. Now we will calculate another ratio, that will be total asset turnover. What will be the formula of total asset turnover? Can you tell me? Already we have discussed various times. I think you remember it. If you don't remember it, no problem, I can tell you. Average net total asset turnover formula will be net sales divided by average total assets. Net sales divided by average total assets. ये फार्मूला है एसेट्स टर्नओवर का. नेट सेल इज गिवन 43 लाख divided by total assets are given that are 15,60,000. Ratio will be 2.76 ratio 1. तो डी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नेक्स्ट ईयर में आपकी 2.76 जो है वो रेशो है. इट मीन्स कि अगर आपके एसेट्स जो हैं वो 2.76 हैं तो आपकी जो सेल है वो 1 है. नेक्स्ट विल बी दी रिटर्न ऑन
एसेट्स। सिंपल फार्मूला है रिटर्न ऑन एसेट्स का, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स net income divided by total assets net profit is given 200,000 divided by 15,60,000, ratio will be 0.13 ratio 1। तो डी स्टूडेंट्स आपने देखा कि रिटर्न ऑन एसेट की रेशो भी रिड्यूस हुई। दिस इज नॉट गुड साइन फॉर द कंपनी। तो कंपेयर अगर करें तो आपकी जो सेकंड ईयर की रेशोज हैं वो अच्छी नहीं है बनिस्बत के आपके 2001 ईयर की रेशोज के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन बेसिकली फॉर द ईयर 2002 का था। नाउ वी विल कैलकुलेट ऑल रेशियोज फॉर द ईयर 2003। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द करंट रेशियो फॉर द ईयर 2003। करंट रेशियो is equal to current assets divided by current liabilities। करंट एसेट्स हम कहाँ से लेंगे? डेटा इज गिवन। करंट एसेट्स फॉर द ईयर 2003 आर 500,000, 290,000, टोटल विल बी 295,000, प्लस कर देंगे इसके अंदर 600,000, तो ये टोटल आ जाएंगे 8,95,000। 895,000 डिवाइडेड बाय टोटल करंट लाइबिलिटीज, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। करंट लाइबिलिटीज आर 380,000 प्लस 225,000, दैट विल बी 605,000 प्लस 140,000, 745,000। टोटल कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। 745,000, रेशियो विल बी 1.20। तो डी स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपकी रेशियो जो है कंपेयर दैन टू 2002 रिड्यूस हुई, लेकिन अगर आप कंपेयर बेस ईयर 2001 के साथ करेंगे तो स्लाइड से इंक्रीज हुई। लेकिन एट दिस मोमेंट सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। कंपनी नीड टू इम्प्रूव द करंट रेशियो अप टू मिनिमम 2 रेशियो। तो ये 2 से बहुत कम है। नाउ वी विल कैलकुलेट द एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो को क्विक रेशियो भी कहते हैं, इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट liabilities। इन्वेंट्री इज गिवन 600,000, ये हम माइनस कर देंगे। $895,000 minus 600,000 divided by 7,45,000, ratio will be 0.40. Now we will calculate the another ratio, that is average collection period. Average collection period is equal to receivables multiply by days in a year divided by credit sales. Receivables are given, days in a year you know already. What are the receivables? Receivables are 290,000
multiply by 365 divided by credit sale is also given. How much? Credit sale is 38 lakh divided by 38 lakh. Ratio will be the 27 days. It means your receivables will be converted into cash within 27 days. It shows that your credit length is increased compared than to previous 2 years. क्या आपने लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो किया और आपने उधार का पीरियड जो है लेंथ ऑफ क्रेडिट वो इंक्रीज कर दिया. दैट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी बट दैट इज गुड फॉर द सेल. नेक्स्ट विल बी दी इन्वेंट्री टर्नओवर. बड़ा सिंपल फार्मूला है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. Cost of goods sold divided by average inventory. That is the formula is inventory turnover. Cost of goods sold is given in your question. We can data from question. Cost of goods sold is 33 lakh and average inventory is given 6 lakh. Cost of goods sold is 33 lakh divided by 600,000 5.5 times. Dear students, आपने देखा कि if you can compare the inventory turnover with the previous years, your inventory turnover is reducing. Now your inventory will be converted into sales only 5.5 times. This is not good sign for the company. Now we will calculate another ratio, that will be total debt equity ratio. Formula simple है. Total debts divided by shareholder equity. Total debt divided by shareholders equity. ये फार्मूला किसका जी? टोटल डेट इक्विटी रेशियो का. ओके. टोटल डेट्स आर गिवन, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन से. टोटल डेट्स कहाँ पे दिए हुए? ये जो अकाउंट्स पेबल से स्टार्ट हो रहे थे 380,000 प्लस 225,000, दैट विल बी 605,000 और 1,40,000 उसमें ऐड कर लें तो ये आ जाएंगे 7,45,000. $745,000 divided by shareholders equity is given. वो कौन सी अमाउंट है जी? लास्ट ईयर की आप देखें 550,000 प्लस 100,000, दैट विल बी 650,000. 650,000. Ratio will be 1.61 ratio 1. Now we will calculate another ratio, that will be gross profit margin. सिंपल फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का. ये स्टूडेंट्स क्या फार्मूला है आप बता सकते हैं? अभी तक याद हो जाना चाहिए. फार्मूला होगा कॉस्ट माइनस, सॉरी पॉज लिया मैंने यहाँ पे. हाउ वी कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? फार्मूला इज द सेम एंड सिंपल. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड divided by net sales. Sales minus CGS divided by net sales. Sales is given and cost of goods sold is also given in the data. How much sales? Sale is 38 lakh minus cost 33 lakh. 38 lakh
minus 33 lakh divided by 38 lakh. Ratio will be 0.132:1. तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी कंपैरिजन अगर करें तो 2002 से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और रिड्यूस हो गया, तो वो है 1.132 कंपेयर देन टू 1. नाउ वी विल कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट मार्जिन. फार्मूला इज सिंपल. नेट प्रॉफिट मार्जिन is equal to net profit divided by net sales. Net profit is given, डेटा से देखें आप, net profit is 100,000 divided by net sales 38 lakh. That will be the 0.026 रेशो 1. यानी कि अगर आपकी सेल $1 है तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 0.026 सेंट है, यानी कि ओनली 2.6% ऑफ द सेल. दैट विल बी द नेट प्रॉफिट मार्जिन. नाउ वी विल कैलकुलेट अनदर रेशो. दैट विल बी द टोटल एसेट्स टर्नओवर. फार्मूला बहुत सिंपल है. नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स. Net sales divided by average total assets. ये जी एसेट टर्नओवर का फार्मूला. नेट सेल इज गिवन 38 lakh डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स आर गिवन. देख लेते हैं हम ट्रायल बैलेंस से. टोटल एसेट्स आर 16,95,000. (2.24:1). यानी कि ये पता चल रहा है कि आपके जो एसेट्स हैं वो कित हद तक बेहतर अंदाज में यूज हो रहे हैं कि हमारी सेल में इजाफा हो. लास्ट वन इज रिटर्न ऑन एसेट्स. Return on assets is equal to net profit divided by total assets. Profit is given in the question, that is 100,000. Total assets are given 16,50,000. 0.06 रेशो 1. यानी कि जो आपको एसेट्स के ऊपर रिटर्न मिल रहा है वो 0.06 है. अगर आपका $1 के एसेट्स हैं तो 0.06 आपको सेंट जो है वो आपको बेसिकली रिटर्न मिल रहा है, यानी कि ओनली 6% रिटर्न है. ये स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी कैलकुलेशन बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ गई होंगी. व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन? वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपने समझने की कोशिश की तो आपको सारी रेशियोज की मीनिंग समझ आ जाएगी. और मैंने साथ साथ क्वेश्चन के आपको उसकी इंटरप्रिटेशन बताता भी रहा हूँ, लेकिन अभी प्रॉपर फॉर्मल वे में आप देखें कि क्या इंटरप्रिटेशन है. द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी हैज डिक्लाइन स्टेडली ओवर द पीरियड as only $50,000 is added to retained earnings. The company must be paying substantial dividends. Second interpretation is receivables are growing at a slower rate, although the average collection period is still very reasonable relative to the terms given. Next, what about the inventory turnover? Inventory turnover is slowing as well, indicating a related build up in inventories. The increase in receivables and inventories, coupled with the fact that shareholders' equity
has increased very little, has resulted in the total debt to equity ratio increasing to what would have to be regarded on an absolute basis as quite a high level. Further interpretation of the ratios are the current and asset test ratio have fluctuated, but the current ratio is not particularly inspiring for the creditors, for the debtors. The lack of deterioration in these ratios is clouded by the relative build-up in both receivables and inventories. Dear students, evidencing a deterioration in the liquidity of these two assets. Now we will discuss about the gross profit ratios. Both the gross profit and net profit margins have declined substantially. The relationship between the two suggests that the company has reduced relative expenses in 2003 in particular. The build-up in inventories and receivables has resulted in a decline in the asset turnover ratio, and this coupled with the decline in profitability has resulted in a sharp decrease in the return on asset ratio. ये dear students interpretation थी इन ratios की. Already we have discussed with the solution of the exercise. Now we will start the next chapter, very interesting chapter, that is more related to the interest coverage ratio. What does mean? What is the company ability to pay the interest on the long-term debts? If company has ability to pay the interest on long-term debts, financial institutions approve the loan for the companies. If the ability of interest not strengthen of the company, then financial institutions feel hesitation for the approval of long-term debts. Basically, this chapter covers two approaches to viewing a firm: long-term debt paying ability, the firm ability to carry the debts as indicated by the income statement, the firm ability to carry debt as indicated by the बैलेंस शीट. यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों से इंडिकेशन मिलेगी कि कंपनी की इंटरेस्ट पेइंग एबिलिटी ऑन द लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है. लॉन्ग रन रिलेशनशिप exists between the reported income resulting from the use of accrual accounting and ability to meet long-term obligations of the firm. Accrual of accounting means basically is related to the accrual basis, means उधार business की बात हो रही है. The amount of debt in relation to size of the entity should be considered. यानी कि बिजनेस के साइज पे ये डिपेंड करेगा. अगर साइज छोटा है तो डेफिनेटली एबिलिटी भी उसी हिसाब से होगी, साइज ज़्यादा है तो एबिलिटी भी साइज के हिसाब से होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय आउटसाइडर्स इन रिलेशन टू दोज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ द फर्म. क्या मतलब? फंड जो है आउटसाइडर से जो प्रोवाइड किए जाएंगे उनका रिलेशन हमने चेक करना है टू दोज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स. यानी कि ओनर्स के फंडेड प्रोवाइडिंग क्या है और
आपके जो आउटसाइडिंग क्रेडिटर्स हैं उनकी क्या कैपेसिटी है. रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय आउटसाइडर्स इज हाई देन द रिस्क शिफ्टेड टू द outsiders or creditors. Large proportion debt in capital structure increases the risk not meeting the principal on interest obligation of the business. Time interest earned. First of all, we will calculate the interest coverage ratio with the time interest earned. Formula will be the recurring earnings means repeated earnings, routine earnings of the business. इसमें से exclude कर देंगे interest expense, tax expense and equity earnings and minority earnings. Already we have discussed these terminologies. That will be the formula divided by interest expense and include कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट. व्हाट डज मीन कि अगर आपने कोई बॉन्ड वगैरह के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट. ये बॉन्ड वगैरह की बात हो रही है, सिक्योरिटीज की बात हो रही है. तो फार्मूला क्या होगा कि रिकरिंग अर्निंग्स एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सक्लूडेड टैक्स एक्सपेंसेस, एक्सक्लूडेड इक्विटी अर्निंग्स एंड माइनॉरिटी अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंक्लूडिंग कैपिटल interest. Now we will discuss further about the times interest earned. Time interest earned indicates that the long-term debt paying ability of the business, and time interest earned consider only recurring income, exclude the income of discontinued operations and exclude the extraordinary items income, and exclude and add back to the income. We need to some items कि हमें ऐड बैक करने पड़ेंगे, वापस ऐड करने पड़ेंगे नेट इनकम में, कुछ एक्सक्लूड करने पड़ेंगे. इंटरेस्ट एक्सपेंस we need to add back interest expense into the income. Income taxes expense, we need to add back in income taxes expenses into the income. Equity losses earnings of non-consolidated subsidiaries हमें ये exclude करने पड़ेंगी. Minority losses और income ये भी हमें exclude करने पड़ेंगी from the recurring incomes. Then include interest capitalized. Already I have told you about the interest capitalized. In case of bonds, interest will be paid. That is called interest capitalized. We need to discussion about the time interest earned. Further comparisons. In case of comparisons of time interest earned, हमें 3 से 5 साल की कम से कम डेटा से इसको कंपैरिजन करना चाहिए. प्रीवियस 3 to 5 years के डेटा से, हिस्टोरिकल डेटा से, फिर हमें ट्रेंड का पता चलेगा कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्म. अदरवाइज हम एनालाइज प्रॉपर वे में नहीं कर सकते. लोएस्ट वैल्यू इज द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट कवरेज फॉर द बिजनेस. Industry competitors and averages. What will be the secondary analysis? Secondary analysis means interest coverage on long-term debts. Use only interest on long-term debts. No practical for external analysis. Short-run coverage. We need to discuss about the short-run coverage of the interest. Add back non-cash expenses to recurring income. Non-cash expenses means depreciation expense. You know very well कि depreciation expense एक ऐसा expense है जिसके ऊपर आपका cash outflow नहीं हो रहा होता, तो वो आपके cash को secure करता है. That is called non-cash items. Non-cash items will be added into the recurring incomes.
for the purpose of interest coverage ratio calculation. Less conservative. Time interest earned, shorter variation. For this purpose, formula will be the recurring earnings plus non-cash expenses means depreciation expense, excluding interest expense, income tax expense, equity earnings and minority earnings divided by interest expense including capitalized interest. तो क्या फार्मूला प्रीवियस फार्मूले में चेंज आया? ओनली वन आइटम इज बेसिकली एडेड. विच आइटम? नॉन कैश एक्सपेंस मींस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस फार्मूले में ऐड अप हो जाएगा शॉर्ट रन वेरिएशन के लिए. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फिक्स्ड चार्ज कवरेज. व्हाट डज मीन फिक्स्ड चार्ज कवरेज? रेकरिंग अर्निंग्स इसमें शामिल होगी, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस करेंगे, एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस करेंगे, इक्विटी अर्निंग्स को एक्सक्लूड कर देंगे और ये स्टूडेंट्स माइनॉरिटी अर्निंग्स को एक्सक्लूड कर देंगे और एड अप कर देंगे इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स. रेंटल्स की यहाँ बात हुई. बेसिकली वी नीड टू डिस्कस अबाउट दी लीज ऑपरेशंस. There are two types of operations, capital lease and operational lease. Capital lease means it will be part of the assets of the business. Operational lease, it will not be the part of the business assets. Operational lease will be the part of the income statement items and capital lease will be the part of assets. So interest portion of rentals need to add up in the recurring earnings. ये फार्मूले में चेंज है फिक्स्ड चार्ज में. डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ रेंटल्स. यानी कि जो रेंट पे आपने ऑपरेशन लीज करवाई हुई उसका जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी इसमें डिवाइड करने में आप एड अप कर देंगे. रेशियो ट्रेंड is usually similar to the trend of time interest earned ratio. We need to discuss further about the fixed charge coverage. Fixed charge coverage include interest portion of operating lease payments. Already I have told you about this thing. We will not add up the capital lease here. General approximation, 1/3 of the rentals will be included as a part of the rental. SEC requires specific calculation using lease terms. SEC means Security Exchange Commission of America, not in Pakistan. And we need to include following items: depreciation, depletion and amortization. Already we have discussed about depreciation and depletion. Depletion is related to the mines like coal mines, etc. Debt principal payments, pension payments, substantial preferred stock dividends, and the more items included as fixed charges, the more conservative the ratio. Disclosure about fair value of financial instruments. We need to disclose the various items in case of this. Disclosure of financial instruments. Fair value is required for the disclosure. On balance sheet assets and liabilities, off balance sheet assets and liabilities. If estimation of fair value is not practicable, descriptive information pertinent to estimating fair value is provided. So dear students, we have discussed various terminologies for today's lecture regarding interest coverage ratio. तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम
क्या करेंगे कि कल की क्लास में हम बहुत सारे इसके रेलेवेंट न्यूमेरिकल करेंगे. टुडे वी हैव डिस्कस्ड वेरियस आइटम्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए. देन वी हैव डिस्कस्ड लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी ऑफ द बिजनेस, income statement considerations when determining long term debt paying ability of the business. Then we have discussed time interest earned, fixed charge coverage and various items related to the interest coverage ratios. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Keep in touch with me and please concentrate on your practical questions. कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.